हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक मेकअप दिखाने जा रही हूँ जो कि आप इस ईद में कर सकते हैं या फिर इस नवरात्रि में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं ले रही हूँ शुगर का कंसीलर नंबर 45। दिस इज़ अ डार्क कंसीलर और मैं इससे अपने अंडर आइज कवर कर रही हूँ, साइड्स ऑफ माउथ। और मेरे एक्ने स्कार्स हैं काफ़ी, अभी भी टेक्सचर स्किन है बट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। सो आई एम जस्ट हाइडिंग दैट एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद द शुगर हाइलाइटर ब्रश। ये हाइलाइटर ब्रश है बट मुझे कंसीलर ब्लेंडिंग के लिए बेस्ट लगता है। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग पिलग्रिम सीरम मैट फाउंडेशन इन दिस शेड सैंड सेबल और मैं इसे ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आई रियली लव दिस फाउंडेशन। यू विल बी सीइंग अ डिटेल्ड रिव्यू अबाउट दिस फाउंडेशन वेरी सून। और ये आप देख सकते हैं, मैंने जूम इन कर लिया है ये फाउंडेशन कैसी दिख रही है मेरी स्किन पे एक्चुअली। देन आई एम टेकिंग दिस इनसाइड कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग फ्यू पॉइंट्स ऑफ माई फेस, जैसे कि अंडर आइज, forehead, bridge of nose, cupid's bow and chin, and I'm blending it with the same brush, and I'm just blending it under my eyes as well, just to make the area a little more highlighted and brighter. Then I'm setting everything with Pond's Pink Loose Powder. So मैं इसे इसकी पफ से ही लगा के अंडर आइज पे छोड़ रही हूँ and then I'm moving to the eyes. So I'm using Makeup Revolution's Soph X palette, जिसमें से पहले मैं शेड ले रही हूँ कुकी डो। इट्स अ लाइट ब्राउन शेड एंड इससे अपने जो आईलिड्स है इसे अच्छे से लगा रही हूँ, स्पेशली क्रीज लाइन थोड़ी सी डीपन आउट कर रही हूँ। And then I'm taking this green shade, it's a shimmery green shade called Festive, और इसे outer corner पे place कर रही हूँ because outfit I'm wearing is green. And then I'm just blending it with the brown जो कि crease पे लगाया था। Then I'm taking this shade जो कि champagne gold color का है called Mirror Ball, and अपनी finger की मदद से I'm just applying onto the lids and I'm just merging it with the green eyeshadow. एंड अपनी ब्राउ बोन पे मैं वाइट आई शेडो लगा रही हूँ जो इस पैलेट में अवेलेबल है, दैट्स अ मैट आई शेडो एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग विद माई फिंगर ओनली। देन आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड कॉल्ड ब्राउनी और इसकी मदद से आई एम जस्ट फिलिंग माई आईब्रोज विद एन एंगुलर ब्रश। नाउ आई एम डस्टिंग ऑफ दी एक्सेस पाउडर जो कि अंडर आइज पे लगाया था। अंडर आइज सेट हो चुके हैं और जो भी बचा खुचा पाउडर है आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑल ओवर माई फेस। लोअर लैश लाइन पे मैं लगा रही हूँ कुकी डो आई शेडो। देन फॉर माई आईलाइड आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की लिप पेंसिल इन द शेड चॉकलेट एंड उसको मैं स्मज कर रही हूँ ब्राउनी शेड से ही विद अ स्मजर ब्रश। For mascara, I'm using Sugar Bold Unfold Mascara. It's a waterproof mascara. And I'm just coating my lashes really nicely with it. And also not forgetting my lower lashes as well. For lips, I'm using Maybelline Ultimatte lipstick in the shade Taupe. And I'm just applying it as a blush. And इतनी पिगमेंटेशन नहीं आ रही थी तो मैंने डायरेक्टली लिपस्टिक लगा ली एंड देन आई जस्ट ब्लेंडेड इट विद द ब्रश एंड ऑल्सो अप्लाइड अ लिटिल बिट ऑन द नोज़। और मैं स्विस ब्यूटी की ही पेंसिल से चॉकलेट शेड से लाइन कर रही हूँ अपने लिप्स एंड मैं सेम लिपस्टिक लगा रही हूँ मेबलिन की अल्टीमेट टॉप। एंड फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग इनसाइट का हाइलाइटर इन मूनस्टोन ब्लिस। इट्स अ क्रीमी हाइलाइटर. So I'm just taking a little bit and just applying to the high points of my cheeks, bridge of my nose, cupid's bow, a little bit of chin and forehead. And that completes my makeup for this festive season. And
अब मैंने अपने ज्वेलरी डाल ली है, थोड़े से बाल बना लिए हैं, एंड दिस इज़ हाउ द फुल लुक लुक्स लाइक. लास्टली आई एम जस्ट गोना अप्लाई अ मिस्ट. दिस इज़ रिकोड की मॉइस्चर स्प्रे. आप कोई फिक्सिंग स्प्रे भी ले सकते हो. इफ़ यू फील डिहाइड्रेटेड देन मॉइस्चर स्प्रे भी ले सकते हो. दैट्स टोटली अप टू यू. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. And I'll be linking the all the links in the description box, so you can go ahead and check it out. And अपनी ज्वेलरी का भी मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, so that you can just check it out. And I hope आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा. And let me know in the comment section what else do you want to see on my channel. And yeah, that's it for the video. I will be seeing you in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy, and stay safe. Bye bye.